अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ वकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। हमारी लास्ट डिस्कशन हुई थी यूएस इकॉनमी और उसका जो इम्पैक्ट हो रहा है इस वक्त इंटरनेशनल सिस्टम उस पे, और जो हमें रिस्पांस आया उस वीडियो से। रिसेंटली ब्रिक्स की एक समिट हुई है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का जो एक इकनॉमिक अलाइंस है उसकी, जून के महीने में। तो आज हमने फिर डॉक्टर अथर मंसूर से रिक्वेस्ट की है कि ये अपने ख्यालात का इजहार ब्रिक्स पे भी करें। सर, वेलकम टू द शो। सर, हाउ डू यू सी द ब्रिक्स? मतलब आपको क्या लग रहा है कि ब्रिक्स इंटरनेशनल सिस्टम में, मतलब 2010 से ये चल रहा है, तो ये कहाँ स्टैंड करता है आज? देखिए, ब्रिक्स की जो इम्पोर्टेंस है वो 2010 से लेके अब तक ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और उसकी दो मेजर वजह। एक तो इसका जो पॉपुलेशन कंपोनेंट है दुनिया में, वो एज ऑफ टुडे अराउंड 42%. So the 42% of the entire global population resides in the BRICS countries, the 5 countries. तो ये एक इंतहाई important aspect है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता. And the two largest countries in terms of population, India and China, they are votes in the BRICS countries. Second जो इसका important aspect है वो economic aspect. So BRICS after 2020 has surpassed the G7 bloc in terms of economic size. तो आई थिंक कि ये जो दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो द साइज ऑफ द पॉपुलेशन विच मीन्स द मैन पावर, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज लेबर, इट रिजाइड्स इन द 5 ब्रिक्स कंट्रीज, 42% ऑलमोस्ट. और दूसरा G7 को उसने सरपास किए, जो टोटल साइज है जमीन का, वो आई थिंक इट हैज़ मेड दिस ब्लॉक एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ब्लॉक ऑफ द वर्ल्ड. सर, मतलब आपकी डिस्कशन से मुझे ये लग रहा है कि ब्रिक्स पॉजिटिवली प्रोग्रेस कर रहा है. एम आई राइट? I would say yes, generally. Keeping aside few political issues, especially between India and China, which are going to be the largest economies by the third quarter of this century. Goldman Sachs की prediction के मुताबिक China is going to surpass the US by 2035, and India is going to surpass the US by 2075. So ये दो लार्जेस्ट इकोनॉमीज होंगी, लेकिन इनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस आपको बताइए, जियो स्ट्रेटेजिकली जिस जगह पे ये लोकेटेड है दोनों, और आपस में एक कंपटीशन टू लीड द वर्ल्ड और टू बिकम, बिकॉज इंडिया का एक अपना पॉलिटिकल सिस्टम है और चाइना का एक अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, और इन दोनों पॉलिटिकल सिस्टम अपने अपने दायराकार में, अपने अपने एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में अपनी अपनी इकोनॉमीज को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करें. China एक representative, India एक representative democracy, whereas China is not a representative democracy. It's a tight authoritarian state. तो दोनों का आपस में एक political वो जो एक रहेगी conflict या rift, वो वहाँ पे और dominate करने का region world में जो global stage में होगा. Except these, I think generally it is progressing in a positive direction. राइट सर. अच्छा सर, एक तासुर है अमूमी तौर पे कि ब्रिक्स में, क्योंकि चाइना एक इमर्जिंग सुपर पावर भी है और चाइना तेज़ी से ग्रो भी कर रहा है, सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी भी है, तो शायद ये चाइना का जो वर्जन है इंटरनेशनल सिस्टम का, जो चाइनीज़ वर्जन, जैसे हम कहते हैं ना चाइनीज़ इकोनॉमिक मॉडल, लाइक दैट द चाइनीज़ वर्जन ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, तो ब्रिक्स उसको इंडिकेट करता है. आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? अच्छा, इसमें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आई थिंक वो a little bit different from what people have been interpreting. पहला वो मैं ये समझता हूँ कि चाइना, ऑल्दो चाइना का एक अपना इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके तहत उसने ग्रो किया है और बड़ा माइंड बॉगलिंग अंदाज में ग्रो किया, और बड़ा शॉकिंग है दुनिया के लिए कि इन जस्ट अबाउट 40 to 45 years it has become the second biggest economy, and it is now within the next 10-12 years it's going to be the largest economy, जो कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा एक I would say एक केस है to deeply analyze कि कैसे एक टाइट पॉलिटिकल सिस्टम, कैसा एक हाइब्रिड इकोनॉमिक सिस्टम इतनी जल्दी ग्रो कर गया विद सच लार्ज पॉपुलेशन. बट एट द सेम टाइम आई थिंक चाइनीज जो मॉडल है इंटरनेशनल मल्टीलैटरलिज्म का, उसमें अगर आप रिसेंटली देखें तो ऑल्दो शी जिनपिंग इज प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, लेकिन ही इज ऑल्सो द मेन पर्सन बिहाइंड द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इट वाज प्रीवियसली नोन एज OBOR, one belt one road. I think it has come a long way in terms of increasing the number of member countries. So presently, I would say around more than 140 countries are member of BRI. So इतना बड़ा multilateral एक structure खड़ा करना international, I think not from a platform जैसे UN था या League of Nations थी World War I के बाद, या UN है World War II के बाद.
China has not created a multilateral organization, but China is bringing the world on board. So I have doubts that China would try to dominate or bring its own international system through BRICS. एक तो ये इसका रीजन है कि चाइना मल्टीलैटरलिज्म और तरीके से लेके चल रहा है, which is BRICS one example. Secondly, I think कि इंडिया का एक अपना इकोनॉमिक पॉलिटिकल मसल है, जोग्राफिक मसल है, रीजनल मसल है, वर्ल्ड मसल है, पॉपुलेशन भी है, पॉपुलेशन का एक मसल है, और इंडिया उस मसल को स्ट्रेंथन करता जा रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. अगर आप देखें तो इंडिया की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, बिकॉज ऑफ इट्स सस्टेनेबल लॉन्ग रन जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनल जो इंस्टॉलेशन हो गई है उसकी इंस्टीट्यूशंस, उससे इंडिया ने इकोनॉमिकली भी बहुत अप फ्रूट्स गेन करना शुरू किया. और इंडिया की ट्रिजेक्ट्री जो है वो इट्स वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन. जैसे मैंने आपको बताया 2075 पे it's going to be the second largest economy, surpassing the US. India. Okay, India, which is correctly, US is around 23 trillion and India is 3 trillion. But it's going to, if it remains on the same trajectory. So India ही China को dominate वैसे नहीं करने देगा. Because जब economic मसल, regional मसल, geographically जो उसका मसल है, population wise, वो इतना बड़ा है, तो दोनों के दरमियान एक वो जो मैंने आपको बताया competition economic भी, एक political भी रहेगा. और चाइना शायद ब्रिक्स से तो नहीं कर सकेगा. कोई और निज़ाम ऐसा आ जाए या कोई और मल्टीलैटरल फोरम या चाइना का कोई और एम्बिशन किसी और तरीके से वो इसको करना चाहे तो कर सकेगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ब्रिक्स से वो इंटरनेशनलाइज करेगा अपने सिस्टम. सर वेरी इनलाइटनिंग आंसर. मेरी दो छोटी सी क्यूरीज हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ. पॉलिटिकल इकोनॉमी जो टर्म है, इसको अगर आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए. लेकिन political economy is a very, it's an overused term right now, without, understanding the real foundations. We need to understand that politics and economics are closely intertwined concepts. Political stability has strong repercussions for economic sustainability and economic growth. Without political stability, whether it's a democratic system like India or US or UK, or whether it's an authoritarian system like Singapore or China. Singapore is a very small country, China is a very big country. Politics has to be stable. If it is not stable, it's not going to have positive repercussions for economics. So political economy is a system which actually tries to study, or political economy is a phrase which tries to study the relationship between politics and economics, and how economics and politics, they have causality for each other. So a proper economy can lead to political. How they complement each other. How they complement each other. This is what it is. Okay. Sir, the answer you gave us, उससे मुझे ये समझ में आ रही है कि चाइना इंटरनेशनल सिस्टम को एज सच कोई रिप्लेस करने की एम्बिशन तो नहीं रखता, लेकिन वो मल्टीलैटरलिज्म का एक न्यू वर्जन उसमें शामिल करना चाहता है, जिसको वो लीड कर रहा है, जिससे उसकी से में इजाफा होता है. Is that what you actually said? Absolutely. This is what I wanted to say. कि China multilateralism में believe कर रहा है, because China is a country which is not going to become an economic giant for the first time. China has remained an economic superpower for 1800 years. It's not that China is going to become, and I told in the previous video also to my audience that China was the number one economy, or number one or number two economies, but India and China from 180 till 1880. So it's only a short period of around 300 years. To be very precise, only 235. The time when we had the glorious Silk Route. Yes, the glorious ancient Silk Route. Ancient Silk Which Route. Xi Jinping is reviving. Right. So China, even in those days, did not colonize. China, even in those days, did not tell the world that the system it had was the best system, or it did not try to impose the system. It engaged in healthy trading, exchange of goods, exchange of services, but not imposing its political or economic system on the world. When it had extensive trade links with even the Roman Empire, up till the modern day Rotterdam. Right. सर अभी रिसेंटली इसी जून के महीने में ब्रिक्स की समिट हुई है, तो ब्रिक्स की समिट से आपके टेक अवेज क्या है? आई थिंक बातें तो बहुत सुनी इस ब्रिक्स समिट पे. फर्स्ट जून को ये केप टाउन में हुआ, साउथ अफ्रीका में. बट आई थिंक 4 or 5 मेजर थिंग्स विच पीपल शुड अंडरस्टैंड. सबसे पहले तो इनका जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, इनका एक बहुत बड़ा एक आई थिंक एम्बिशन हैज कम फॉरवर्ड in this summit is that they want to strengthen multilateralism
They want to give the world political, stability, security, economic and financial stability, cultural and people-to-people exchanges. They want to enhance and strengthen that. And they want to use BRICS as a model to showcase to the world that political stability, security, economic and financial stability, or people-to-people and cultural exchanges can be enhanced. Second, I think their commitment towards the SDGs, the Development Agenda of 2030. जिसके अंदर आपको पता है sustainable goals. BRICS की commitment towards SDGs, Sustainable Development Goals. Because these are the countries, especially China and India, which are now moving from middle income to upper income. Soon they will be moving toward, for example, China is a middle income country right now, but it is targeting to become a upper income country and move into the richer part of the world. तो SDGs की तरफ commitment important है इन countries की तरफ से. इसके अलावा I think their commitment towards a free and fair global trading system. Free and fair global trading system, not dominated by any power. Not dominated by any power. WTO should define the rules of the game. They want WTO at the center, or at the core of that system. इसके अलावा, I think importance of G20, because you see, they have surpassed, BRICS have surpassed G7 Yes. in terms of economic size. Now G20 has BRICS countries. That's what my next question is, by the way. So I think they are also committed towards, giving importance to G20 and not just G7. So ये 4-5 points हैं. I think these are very important from this latest UN का. अच्छा सर, foreign affairs का करना. आपको लगता है कि ये फ्यूचर टाइम्स में G7 का एक पोटेंशियल कंपैटिटर बन के सामने आएगा ब्रिक्स? I think surely economic blocks में, it's not like EU, क्योंकि वो तो एक बड़ा यूनियन है, बट श्योरली जब दुनिया की 2 बिगेस्ट इकोनॉमीज एक इकोनॉमिक ब्लॉक में मौजूद होंगे, तो वो इकोनॉमिक ब्लॉक G7 को कुछ ना कुछ तो इकोनॉमिक डेंट डालेगा. और इकोनॉमिक डेंट डालना भी चाहिए, बिकॉज इट्स नाउ द वॉर ऑफ इकोनॉमिक्स. It's not going to be traditional military, because there is enough death threats in the world, because it's mutually assured destruction. And हम उसकी तरफ तो जाना नहीं चाहिए. Economic war. And I think good economics is known because of perfect competition. Yes. So Right. We need to compete with each other in producing goods and services and innovating. सर, हम देखें, हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में एक जनरल टेंडेंसी भी है कि हम हर चीज़ में इंडिया से कंपैरिजन करते हैं, बट आज इंडिया ग्लोबल स्टेज पे एक बड़ा विजिबल प्लेयर बन चुका है. बट मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि इंडिया को हम यूएस के साथ भी देखते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे. इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी का रेड कार्पेट विजिट भी चल रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया इज़ वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट इन ब्रिक्स. इंडिया रशिया के साथ भी अपनी ट्रेड वैसे ही कर रहा है, रशियन ऑयल भी ले रहा है और सब कुछ. तो इंडिया दोनों साइड्स पे चल रहा है. तो ज़रा आप इंडिया का थोड़ा स्टेटस बताएं, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. आई थिंक इंडिया इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट. हमारा जो इंडिया के साथ कॉम्पिटिशन है वो अपनी जगह, क्योंकि हम एक जोग्राफिकली एक मुल्क से निकल के एक मुल्क बने हुए हैं, और इंडिया ने हमें वो वाला पाकिस्तान रहने के लिए दिया, स्पेशली आफ्टर 1971. तो वी फील इनसिक्योर, व्हिच इज नेचुरल, कि हम इकोनॉमिकली भी, मिलिटरीली भी, पॉलिटिकली, रीजनली भी हम थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं कंपैरिजन टू इंडिया, बिकॉज इंडिया की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी ज़्यादा स्टेबल रही हैं, इंडिया की इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन भी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, सोशल इंस्टीट्यूशन. इंडिया स्वास्थ्य खेलना शुरू हो गया कि इंडिया को वो जो पॉलिटिकल इकोनॉमी उससे बड़े पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो. जो मैंने अभी बात की थी कि स्टेबल पॉलिटिक्स की वजह से स्टेबल इकोनॉमिक्स, सस्टेनेबल ग्रोथ, सोशल एवोल्यूशन, एंड दैट इंडिया previously being a kind of a semi-communist or tilted towards socialism kind of a state, has now moved to a system which has, because of strong democratic institutions and economic institutions, is reaping or getting the results in terms of uplifting the level or standard of living of its population. India's smartest take here, right? India is a representative democracy, nobody can challenge. It's the biggest democracy of the world. Yes. And in terms of area and population. In terms of area, in terms of population. So it's the biggest, इतनी 1.4 billion लोग जब वहाँ पे रह रहे हैं, and it's being run by a democratic institution, so it has a very positive image and a very positive perception within the representative democracies of the world, which are the richer countries of the world. तो उसने अपनी उस साइट को कैच किया हुआ है अपने लिंक्स के साथ, उसके साथ.
तो यानी ये न्यूट्रलिटी का जो पॉस्चर डेवलप किया है इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में और इकोनॉमिक्स को एक इंजन बना लिया है उन्होंने, तो दैट इज पेइंग देम ऑफ। और पीछे क्योंकि वो यूएसएसआर ब्लॉक का पार्ट रहा है और रशिया इज फॉर्मल यूएसएसआर और कॉर्पोरेट रशिया में है जो फॉर्मल यूएसएसआर था, तो उसके साथ भी रिलेशनशिप। तो आई थिंक इंडिया इज प्लेइंग स्मार्ट बिकॉज इट इज नॉट फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक्स, इट वांट्स इट्स इकोनॉमी टू बी सो स्ट्रॉन्ग कि वो खुद ही बाकी चीज़ें जो कनेक्शंस और अलायंसेज हैं वो खुद ही उससे इवॉल्व होते जाएंगे। तो वो भी क्योंकि इवॉल्व कर रहा है तो वो न्यूट्रलिटी के स्टैंड पे ज़्यादा आई थिंक बैक्स। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपने भी नोटिस किया होगा कि ब्रिक्स की जो समिट हुई उसमें कुछ और स्टेट्स ने भी अपना एक इंटरेस्ट शो किया है, जो G20 की मेंबर स्टेट्स में ही सऊदी अरब, ईरान के, वो मेंबर बनना चाहते हैं। ब्रिक्स की पॉसिबल एक्सपेंशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए पॉसिबल एक्सपेंशन तो हो सकती है डिपेंडिंग ऑन नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्रीज विच आर करेंटली पार्ट ऑफ ब्रिक्स। कभी भी ये जो मल्टीलैटरल अलायंसेज होती है ये ब्लॉक इस तरह नहीं लगती अनलेस दे आर पॉलिटिकल मिलिट्री अलायंसेज। ब्रिक्स की परसेप्शन एक इकोनॉमिक अलायंस है, पॉलिटिकल अलायंस तो ये है नहीं, ठीक है। और वैसे भी पॉलिटिकल अलायंसेज जो होती हैं वो रीजनली डिस्पर्स्ड एरियाज में तो नहीं हो सकती। ब्राज़ील साउथ अमेरिका में है, साउथ अफ्रीका अफ्रीका में है, चाइना और इंडिया जो है वो एशिया में है, और रशिया भी एशिया, वो यूरोप में और एशिया में दोनों में है। सो इट्स एन इकोनॉमिक ब्लॉक। तो अगर उनके इंटरेस्ट में सऊदी अरेबिया उस पिक्चर में आता है, फिक्स है, कोई और ऐसी कंट्री आती है जो उनकी अलायंस और इकोनॉमिक ब्लॉक को और स्ट्रेंथन करेगी इन टर्म्स ऑफ फॉर एग्जांपल ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ पीपल टू पीपल एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज, फाइनेंशियल एक्सचेंज, इकोनॉमिक एक्सचेंज, जो उन्होंने लेटेस्ट अपने मीटिंग में भी ये डिस्कस किया है, और इसके अलावा उनको स्ट्रेंथन करेगी ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर, आई थिंक दे वुड बी ओपन। आई डोंट थिंक एनी ऑब्स्टिकल्स और हिंड्रेंसेस इन 5 कंट्रीज को ये लगाए कि जी हमारे अंदर कोई नया मेंबरशिप नहीं हम देंगे या हम मेंबर को हम नहीं देना चाहेंगे। बट आई थिंक इट विल बी डिक्टेटेड बाय देयर ओवरऑल इंटरेस्ट, national interest or plus उनका economic interest. So you are saying interest will drive the expansion of BRICS, and that will obviously that will add more power to BRICS. Absolutely. Right. Thank you so much, sir, for this enlightening discussion. और व्यूअर्स आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर आप कोई और टॉपिक्स पे चाहते हैं कि हम वीडियोस ट्रैक्स के प्लेटफॉर्म से आपके लिए लाएं तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।